Students, today we are going to discuss our first chapter, motion. In this chapter, first we discuss about motion. What is motion? If an object changes its position with respect to its surrounding with time, then it is called in motion. Example: fish swims in water, car or bus moves on a road, train moves on the track, birds flying in the air, etc. Second thing, in contrast of motion, there was a body. Some bodies are in rest. Then the question arises, what is rest? If an object does not change its position with respect to its surrounding with time, then it is called at rest. If a body does not changes its position with respect to time, this is called rest. If body changes its position with respect to surrounding with time, then it is in motion. Examples of rest: a book lying on a desk is at rest because its position with respect to the desk does not changes with time. Second thing, rest and motion are two things that are interlinked. A body is in rest or a body is in motion. How we can decide the body is in motion or body is in rest? To find out that, we have to know some basic terms related with motion. The first main important point is reference point. What is reference point? A fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position, known as reference point or origin. फिक्स पॉइंट क्या होता है? फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है. सेकंड term related with motion is position. It is the point in space where an object is present with respect to the reference point. Position वो point होता है जहाँ पर स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली प्रेजेंट होता है. सेकेंड थिंग, distance. What is distance? The distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a body during its course of motion. What is distance? जब कोई बॉडी किसी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती है, मोशन करती है, तो वो मोशन करके अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक गई है, उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस. नेक्स्ट, पाथ लेंथ. व्हाट इज पाथ लेंथ? इट इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन अलॉन्ग विद विच द पार्टिकल हैज़ एक्चुअली मूव्ड. Path length can be defined as the minimum distance between initial and final position. Next thing, types of motion. Basically there are three types of motion: rectilinear and translatory motion, circular and rotatory motion, auxiliary and vibratory motion. First we are going to discuss about rectilinear motion. The motion in which a particle moves along a straight line is called rectilinear motion. If body और a particle moves along a straight line, then the motion is called translatory motion. अगर कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन. द मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स along a circular path is called circular motion. If a body rotates about a line axis passing through it, then the motion is called rotatory motion or rotational motion. सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, मूव करती है, तो हम बोलते हैं द बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन. और इफ बॉडी कंटिन्यू टू रोटेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है स्पिनिंग व्हील. थर्ड, ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. व्हाट इज ऑक्सिलेटरी मोशन? द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक and the fourth repeatedly about a fixed point. It is called auxiliary motion. The extent to which the body moves on either side of the fixed point is called the amplitude. If an auxiliary motion, the amplitude is very small, then the motion is said to be vibratory motion. What is auxiliary motion? If an body, अगर कोई बॉडी फ्रो एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे कि एक पेंडुलम मूव करता है, वो एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स होता है और फ्रो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, फिर रिपीट करता है, ये फ्रो एंड बैक मोशन. सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑक्सिलेटरी मोशन. देन व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? इफ द एम्पलीट्यूड of the vibration of oscillation
or oscillation is very small, then such type of motion is called vibratory motion. If the pendulum, जो pendulum move कर रहा है फ्रो एंड बैक, जो वो मीन पोजीशन से जितना वो डिस्प्लेस कर रहा है अदर साइड में, उसको उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. और अगर ये एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होगा तो उस एम्पलीट्यूड को क्या बोलेंगे हम, वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड वाले मोशन को क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेटरी मोशन. थैंक यू.